Hello everyone, welcome back to Sleepy Radiology classes and myself Survey here. Today we are going to discuss about an interesting topic, and this topic is mainly not limited to our radiology department but also as an awareness for the publics too. So today's session we are going to discuss on radiation protection of pregnant women in radiology. So in radiology, what are the steps we take when a pregnant lady comes to us or we have a patient who are pregnant, or we have staffs, female staffs basically, who undergoes pregnancy, and what are the measures we do for them. So in this session, before going to the main topic for the day, we'll have some questionnaires and we will answer them. So we are going to see first what is the radiation effect on embryo. So we all know that development of embryo, when the embryo is developing, and if there is certain a minimum also doses interacts with him during his development, it will cause an havoc. It's very dangerous. Chances will be there and it will be always 99%. So how this happens? This mainly happens due to the cell division, cell migration, and cell differentiations. Because at each and every second after conception, the baby, the fetus inside the womb undergoes gradual development. So that is why, to save the fetus inside the womb and to protect the lady from any kind of abortion, radiation protection is very much important in the area of ionization radiation area. So here we have two scientists who are very properly known for radiation protection, and they are Bargoni and Triboni. And Bargoni and Triboni laws of radiosensitivity states that those cells who undergo cell division continuously, rapidly, are more sensitive. So basically we say that we have to protect the fetus, pediatric patients. Why? Because their cells undergoes continuously cell division. So that is why we have to always keep in mind that those cells who undergoes continuous cell division, जो भी cell continuous cell division state में है, most example है जो हमारा gamete cells है, gonadal cells है, तो they are more sensitive to radiation. So that is why protection of them is very much mandatory, and that is why for patient हम लोग क्या use करते, we are using the gonadal shield. And if we don't do, what will happen is this babies before they come to the earth will suffer from prenatal death. Though if they come to the earth, they will have some certain pathological changes like congenital abnormalities will be there, growth impairment will be there, reduce in intelligence, their IQ levels will be low, genetic aberration, they will have some genetical problems, as well as increased chances of cancer rate. So basically, how this radiation affects on the pregnant lady, it will depend on what amount of dose she has received during her pregnancy. Basically, for radiation protections we consider the years or month, but while we are dealing with the pregnant ladies, we have to decide only the duration of pregnancy. So mainly what amount of dose they have received, what is the dose rate they have received, what was the type of radiation they have received, whether it was a alpha ray, beta ray, gamma ray, proton or neutron, particulate radiation, like that, and in which stage of pregnancy, in which stage of gestation they have received. So basically the first stage, that is the pre-implantation stage, and the organogenesis stages are very much crucial for them. Then the fetal development stage, that is mainly the first and second trimester, we will say mainly the first trimester. In that stage all the cell divisions occurs. So that stage will be very much important, and very much care should be taken regarding dealing with the pregnant patients in the department, and also for female staffs who are pregnant. So next is gestation periods in radiology. So basically जो हमारा रेडियोलॉजी है उसमें हम नॉर्मल प्रेगनेंसी का जो स्टेजेस है वो नहीं मानते, जैसे कि फर्स्ट, सेकेंड ट्राइमेस्टर, थर्ड ट्राइमेस्टर. फर्स्ट होते हैं हमेशा 0 to 12 वीक्स, मतलब जीरो का मतलब कब, जब उनको प्रेगनेंसी डिक्लेयर हो गया है. फिर सेकेंड ट्राइमेस्टर स्टार्ट होते हैं 12 to 22 वीक्स, और थर्ड ट्राइमेस्टर स्टार्ट होते हैं फ्रॉम 22 to 40 वीक्स. बट हमारे रेडियोलॉजी में जो कंसिडरेशन करेंगे या कैलकुलेशन करेंगे वो थोड़ा अलग से होगा, जैसे कि प्री इम्प्लांटेशन स्टेज होगा, नेक्स्ट मेजर ऑर्गेनोजेनेसिस स्टेज होगा,
फिटल स्टेज होगा। और ये बात ध्यान में रखना है कि चाहे कोई भी स्टेज हो इन ऊपर में से, all are sensitive to radiation. So basically we have three types of radiation stages: pre-implantation stage, major organogenesis stage, and fetal stage. And among this, all these stages are very much sensitive to radiation, and any time if certain doses of radiation hits the fetus, there will be an havoc, there may be any danger effects. So please please and please, जो भी प्रेग्नेंट लेडीज हैं, प्लीज आप एक बार कंफर्म कर लीजिए बिफोर गोइंग टू द रेडिएशन एरिया। अगर आप प्रेग्नेंट हो तो आयोनाइजेशन एरिया जैसे कि एक्सरे डिपार्टमेंट, सीटी डिपार्टमेंट, फ्लूरोस्कोपी है, इंटरवेंशनल रेडियस एरिया में मत जाइए। अगर आप कोई भी स्टाफ्स हो, स्पेशली हमारा रेडियोलॉजिकल फीमेल स्टाफ्स और ओटी स्टाफ्स, प्लीज आप लोग कोई भी रेडियोलॉजिकल प्रोसीजर्स में ज्वाइन मत कीजिए। अगर आप प्रेग्नेंट हो तुरंत ही आप आरएसओ को इन्फॉर्म कीजिए, या तो आपके जो इंचार्ज है उनको इन्फॉर्म कीजिए, तुरंत ही आप लोगों को नॉन आयनेशन एरिया में शिफ्ट कर दिया जाएगा। तो प्लीज टेक इट सीरियस बिकॉज यू आर कैरिंग अ स्मॉल लाइफ, न्यू लाइफ, you have to protect him or her from the harmful rays of radiation. Next, we will move to what is pre-implantation stage. It is the stage when just the union of sperm and egg happens. That is the first mating date, and that date we will calculate as 01 date. Okay, and until it forms the zygote and it embeds into the uterine wall. जब आप जब एक कपल्स को मीटिंग होता है, तो जब उस मीटिंग के द्वारा स्पर्म और एक यूनियन करते हैं, और साथ ही साथ अनटिल एंड अनलेस जाइगोट फॉर्मेशन होके वो यूट्राइन वर्ल्ड में प्लेसेंटा सेटअप नहीं होते, तब तक हमारा जो स्टेज होता है वो होता है प्री इम्प्लांटेशन स्टेज। एंड 9 to 14 days इज द कंसेप्शन टाइम। 9 to 14 days जब आप लोगों का मैटिंग हुआ है, उसके बाद 9 to 14 days विल बी योर चांसेस। और ये जो स्टेज है वो बहुत ही सेंसिटिव होते हैं। तो अगर आप लोग फैमिली प्लानिंग कर रही हो या आप लोग प्लानिंग कर रहे हो कि टू हैव अ बेबी, प्लीज कंफर्म दैट आप लोग रेडिएशन एरिया पे नहीं रहोगे, या तो आप एक बार आपके इंचार्ज को इन्फॉर्म कर लोगे, अनलेस एंड अनटिल you think or you get the result of positive, because chances is 9 to 14 days, and that stage we doesn't undergo any kind of test, so you know it better, so you have to take the precaution from that stage. as रेडिएशन में डैमेज एंड रिजल्ट टू प्री नेंटल डेथ, बहुत सारे ऐसे केसेस आ जाते हैं कि कभी कभी प्री नेंटल डेथ्स हो सकते हैं, तो don't give a chance to radiation also to be a reason of this IUD, intrauterine deaths. Dose received above 50 to 100 milligrams will have the more chances of having spontaneous abortion rate. तो जिन लेडीज को, मतलब जो भी फीमेल स्टाफ्स है, इनको हम मॉनिटर कर सकते हैं, तो आप लोगों को एक एडिशनली बैच दिया जाएगा जिसमें आपको 2 मिलीग्राम तक ही परमिजिबल लिमिट है। तो अगर आप लोगों ने 50 या 100 मिलीग्राम रिसीव कर लिया है ड्यूरिंग द एंटायर टाइम ऑफ प्रेगनेंसी, तो यू विल हैव द chances of having continuous abortion rates. So please be careful and take precautions. Next is the organogenesis stage. It begins from 2 to 8 weeks, that is 15 to 50 days. That means by the time you will be confirmed that whether you are pregnant or not. And in that time already the fetus starts to develop its vital organs. So that is why this stage is named as organogenesis, formation of the organs. So you also have to be careful during this thing, and this is the most sensitive stage of our development of fetus. So it is a critical period, as I said you, it is the most sensitive and dangerous stage. ये बहुत ही खतरनाक स्टेज होता है और आपको प्रिकॉशंस लेना ही जरूरी है, क्योंकि अगर इस स्टेज में थोड़ा सा भी रेडिएशन लग जाएगा तो देयर विल बी चांसेस ऑफ इंड्यूस बर्थ डिफेक्ट, मतलब कॉन्जेनिटल एबनॉर्मलिटीज का चांसेस बढ़ जाते हैं, चांसेस बढ़ जाता है, ठीक है, होगा नहीं, तो ये कंफर्म कर लेना एक बार। नेक्स्ट इज द एम्ब्रायोनिक malformation starts from cataract. Patients may have cataract, mental retardations, they may have microcephaly, they can have micro
pathalmia, they can have like anemic patients, they can be leukemic patients. Growth retardation, they will be dwarfism. Skeletal defects, they may have like bone age, their bones will not develop properly, or they will have the chances of carcinogenesis, that is blood cancer, GI bleed cancers, all these types of cancers ka chances बढ़ जाएगा, and that will be all congenital, means from the birth, and it can be curable, it cannot be curable. So please be cautious who are in the radiation area, especially the females. When you are pregnant, please inform the RSO, your employee that is the in charge, and take immediate measures to save the new life before anything happens. Next is the dose limit will be above 100 milligray, there will be the chances, but if you are receiving anything above 1 gray, there will be definitely CNS abnormalities, and that will affect the cerebral nervous system. Next thing is the last stage is the fetal stage, and it starts from 50 to 80 days. That is almost, it starts from the 13 weeks to 40 weeks, means first second trimester and the third trimester mainly, and there will be less chances of prenatal death and congenital abnormalities, because already the organs have developed. Now they will just have the growing, they will just grow in their number, size and all. So, and they will just be in developing stage, so the baby will not have so much chances of prenatal death or the congenital abnormalities. But also you have to be careful, because the primary risk will be growth retardation. Sometime due to radiation, that area will stop forming mutation, so cell will not develop. That means what, there will be any kind of MRT, you will not have proper height for your babies. Abnormalities in the nervous system, he may become mentally challenged child, sorry. And there may be impairment in the sensory organs also. Some may have like the nose will not develop properly, the ears will not develop properly. So far we have seen so many cases, but that is not actually the main reason of our radiation effect only, but it may occur. You have a best example for you, जो हिरोशिमा नागासाकी है, उसमें आज भी ड्यू टू द इफेक्ट ऑफ रेडिएशन, सिवियर इफेक्ट ऑफ रेडिएशन, वहां पर जो भी बच्चे पैदा हो रहे हैं, दे आर हैविंग सम types of congenital abnormalities. So that is why you have to keep in mind that first and second जो प्री इम्प्लांटेशन है वो काफ़ी सेंसिटिव होते हैं, ऑर्गेनोजेनेसिस दी मोस्ट सेंसिटिव होते हैं, क्योंकि वहाँ पर ऑर्गन्स डेवलपमेंट होते हैं। बट जो हमारा फिटल स्टेज है, मतलब ऑलमोस्ट मिड वे बिटवीन द सेकेंड एंड थर्ड ट्राइमेस्टर, उसमें चांसेस कम रहते हैं। फिर भी आपको प्रिकॉशन लेना है, क्योंकि नहीं तो क्या हो जाएगा, बेबीज को ग्रोथ रिटार्डेशन का चांसेस रह सकते हैं, नर्वस सिस्टम का चांसेस, एबनॉर्मलिटीज का चांसेस हो सकता है, चाइल्ड ल्यूकेमिया जैसे बीमारियां हो सकती है, या behavior alteration भी हो सकता है। Maybe that baby will suffer from low IQ levels too. So that is why you have to take the precautions. And in this stage the radiation should not exceed above 50 मिलीग्रे। 50 मिलीग्रे क्रॉस कर लिया है तो ये चांसेस का, ये डिजीज का होने का चांसेस और भी बढ़ जाता है। अगर 50 मिलीग्रे के नीचे है तो आप लोग एक बार एश्योर कर सकते हो कि ये सब चीज़ें नहीं हो सकता है। सो दैट वाज ऑल अबाउट द types, and see here the severity of death is more in pre-implantation stage, you can see here. Next, organogenesis means organ abnormalities will be having, so it is medium, but almost in third trimester we can say that the fetus has nil chances, though you have to take the precautions. Now in old ages what happened was there was no such machines like MRI, so it was very difficult to rule out what was the position of the baby with the help of ultrasound, and how many twins are there, what are their positions. So nowadays we can do it with the help of fetal MRI. आजकल fetal MRI आ गया, जिससे वजह से आप ये कंफर्म कर सकते हो कि बेबीज में कोई एबनॉर्मलिटीज है या नहीं है, उस fetus का पोजीशन क्या है। अगर मल्टीपल ट्विंस है तो उन ट्विंस किस पोजीशन में है, सब कुछ देख सकते हो। बट बिफोर दैट, before the invention of MRI, yeah, so what was the ultimate option? Ultrasound was the ultimate option. But how they used to locate all this position and abnormalities? They used to do with the help of X-ray. So in that case, you can say that if there is any chances, or if you want to see anything, that time they used to do after 37 weeks, we can do X-ray abdomen, but that should be taken in PA view. Why PA view? Because maximum of the radiation will be received by the mother itself, not the fetus directly. So the once it reaches to the fetus, that beam will be almost negligible.
PA view means what? The beam will come from posterior to anterior. And where is the baby? Baby is anteriorly. So that is why the most preferable is 37 weeks, and we should do it in PA view, or we can take the oblique view. Oblique means what? The ray will pass in between the mother and the fetus. So oblique also will be an option for you. So nowadays we are not doing, we can confirm with the help of fetal MRI. Next thing is, when we are giving contrast, if we are having any lactating mothers or pregnant ladies, you have to be confirmed that pregnant ladies should not go any contrast studies. Why? Because there are two types of effects may happen. One is cross placenta, that why the time the fetus is taking, जो भी fetus है वो nutrition कैसे लेते हैं? Via the umbilical arteries, right? So whatever the mother will take, if you are giving the contrast, that umbilical artery will take all the contrast and it will circulate to the fetus. Okay, so our and remain on and remains on maternal side too. So that time what happens is, so we are giving contrast contains iodine, and that will go via the umbilical artery से जाएगा, और वो कहाँ हो जाएगा? It will strike to the थायराइड ग्लैंड, एंड थायराइड ग्लैंड में क्या होता है? आयोडीन का सिक्रेशन होता है, प्रोडक्शन होता है. तो ज्यादा आयोडीन जम जाएगा तो क्या होगा? आगे चल के दैट बेबी विल सफर फ्रॉम hyperthyroidism. So that is why we are not giving contrast to the pregnant ladies, because there happens the thing is cross placenta, and what we have to maintain is, strictly we have to maintain the 30 week to 22 weeks. Okay, and if there is lactating mothers, there also what happens is the contrast may stay, that is the maternal side. It may stay in the mammary glands, mammary tissues. So you have to eject the milk before you give to the baby. So at least we are considering that 24 hours we should not feed our baby, and after 24 hours we should eject the first milk. फर्स्ट पहला जो मिल्क है उसको इजेक्ट करना है, फिर आप दोबारा से फीडिंग स्टार्ट कर सकते हो. So next thing is, there are some few guidelines given by ICRP 84. So what does it says is, when you are pregnant, you should undergo some following criteria. First thing is patient exposure. Next thing is undergoing medical examinations in pregnancy. And finally is radiation exposure to the staff. So here it describes not only for the patient what regulations are there, also for how you will protect your staffs, basically the female staff. So today I will discuss only about the patient exposure, and I will not discuss later on with the rest two topics. So when you are seeing this kind of sign, this is called known as pregnancy caution sign. It is already said that those who are pregnant should not enter into the ionization radiation area like CT scan, MRI and fluoroscopy. So when we are talking about the patient exposures, we have few questions in mind. First question is there safe level in radiation protection? क्या रेडिएशन लेवल पे सेफ कुछ लिमिट है कि हम उस लिमिट पे रेडिएशन प्रोटेक्शन कर सकते हैं फीमेल लेडीज का? ऑब्वियसली द आंसर विल बी नो, क्योंकि we know that in radiation protection we have something called as justification, and justification doesn't depends on dose limit. तो अगर आपके पास कोई प्रेग्नेंट लेडीज है या प्रेग्नेंट स्टाफ्स है, आपको सबसे पहले जो काम है you have to do is you have to justify that when you are giving the radiation, is it really helpful for her or not, whether it is going to expose the fetus or not. So it is said that it is to be justified and should be optimized with appropriate dose, keeping both same for staff as well as patient. तो मानो कि आपके पास कोई इमरजेंसी स्टाफ आ गया है या पेशेंट आ गया है, सीवियर आरटीए हुआ है, तो आपको ये ध्यान में रखना है कि अगर मैं उसके लिए एक्सरे कर रहा हूँ, सीटी कर रहा हूँ, सीटी तो बिल्कुल ही नहीं करना चाहिए, तो एक्सरे कर रहा हूँ, तो वो जस्टिफाइड है क्या? अगर बहुत ही ज़्यादा नेसेसरी है, मानो कि उसको हैंड में फ्रैक्चर हो गया, तो पेल्विक और एब्डोमेन एरिया पे तो नहीं है, तो अगर आप लोगे भी, आपको क्या करना है, यू हैव टू गेट एनओसी फ्रॉम द रेफरिंग डॉक्टर, प्लस आपको डोज को लिमिट करना है, लैडाप्रेंस लगाना है पेशेंट को, और आपको ये भी ध्यान में रखना है कि जितना कम डोज हो सके उतना कम में हम उस प्रोसीजर को खत्म करेंगे. क्लियर? तो फर्स्ट लेवल का आंसर है कि हमारे रेडिएशन का कोई भी डोज लिमिट नहीं है, क्योंकि हमको सबसे पहले क्या करना है, यू हैव टू जस्टिफाई, आपको जस्टिफाई करना है कि ये नेसेसरी है या नहीं है, तब आप अंडरगो कर सकते हो. नेक्स्ट इज कुछ क्वेश्चंस. नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट आर दिस 10 days, 14 days एंड 28 days रूल इन
and what is their present status. So as far we know that it is important in radiological facility to have the procedure and to determine the pregnancy status of all female patients in the reproductive age before any significant doses reaches to the embryo or fetus before it bonds. तो अगर आप हमारे रेडिएशन का जो एरिया है उसमें एक गाइडलाइन है कि अब जब भी आप कोई प्रेग्नेंट लेडीज या प्रेगनेंसी स्टेटस वाले लेडीज को एग्जामिन करोगे या कोई भी रेडियोलॉजिकल प्रोसीजर करोगे, इट इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट कि आप एक बार कंफर्म कर लो कि उन लेडीज के लिए वो सिग्निफिकेंट है या नहीं है, वो रेडिएशन डोज काफ़ी अंदर में रहने वाले बच्चे को तो इफेक्ट ना कर ले या उसके जो रिप्रोडक्टिव एज है उसमें कोई इफेक्ट ना कर ले। तो इसलिए कुछ हमारे पास गाइडलाइंस है, कुछ रूल्स है जिनका नाम है ये 10 days, 14 days or 28 days rule. And this approach is not uniform in all the countries and facilities. Once the approach is done, it will be based on only for reproductive age ladies. जो ladies reproductive age में है और only married है, chances of pregnancy है, उन्हीं पे जब भी आप प्रोसीजर करोगे एक बार प्लीज कंफर्म कर लो कि ये रूल्स है, इन रूल्स में है या नहीं है, ये ओबे कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो दैट इज वाई व्हाट वी डू इज वी ऑलवेज चेक फॉर LMP, लास्ट मेंस्ट्रुअल फेज। तो चलते हैं पहले 10 डे रूल क्या है। और 10 डे रूल सबसे पहले आया था। एक्चुअली ये जो रूल्स है ये बेसिकली डिपेंड करता है हमारे जो रिप्रोडक्टिव फर्टिलाइजेशन साइकिल है उसमें बताया गया है कि मेंस्ट्रुएशन का फर्स्ट डे से 14 डे तक कोई भी कंसेप्शन नहीं होता है। तो मतलब एक लेडी का कोई चांसेस नहीं है। बट आफ्टर 14 डेज क्या होता है, 14 टू नेक्स्ट 7 days लाइक 21 days, 14 to 21 days में एक लेडी का ओव्यूलेशन स्टेज स्टार्ट हो जाता है। तो मतलब अगर इन स्टेज में थोड़ा सा उनका मैटिंग भी हुआ है तो इनको बढ़ जाता है चांसेस टू गेट प्रेग्नेंट 14 to 21 days में। दोबारा से 21 to नेक्स्ट अप टू द पीरियड कम्स, दैट स्टेज इज ऑल्सो अगेन सेफ पीरियड। तो एक लेडी के लिए सेफ पीरियड क्या है, फ्रॉम द ऑनसेट ऑफ फर्स्ट डे 0 day टू 14 days तक वो सेफ है, तो लेस चांसेस। नेक्स्ट क्या है, 14 to 21 days है उसका ओव्यूलेशन स्टेज, चांसेस है, हाई रिस्क है। फिर 21 से लास्ट जो भी डेज है जब तक उसको पीरियड ना आ जाए तो वो स्टेज है उनके लिए दोबारा से सेफ स्टेज। तो इसी के अनुसार ही बेस्ड ऑन दैट ओनली आवर दिस रूल्स हैज बीन प्लान्ड। So in old days environment was very nice, we don't have any global warming issues, so that time we used to follow the 10 days and 14 days rule. Okay, but nowadays we are prescribed by ARB, Atomic Energy Regulatory Board, to follow only the 28 days rule. So before going that, we will know what is 10 days rule. It states that whenever possible one should confirm the radiological examination of lower abdomen and pelvis within 10 days interval following the onset of menstruation cycle. तो 10 days रूल ये बताते हैं कि अगर आप रिप्रोडक्टिव एज में हो, आप मैरिड वुमेन हो, तो आप जो रेडियोलॉजिकल प्रोसीजर्स है स्पेशली कौन सी एरिया में, लोअर एब्डोमेन और पेल्विस एरिया में 10 दिन के इंटरवल में कर सकते हो फ्रॉम द फर्स्ट डे ऑफ योर मेंस्ट्रुएशन टू 10 days। उस डेज में आप सेफ हो, बट उसके बाद करने से पहले कंफर्म कर लोगे कि आप प्रेग्नेंट हो या नहीं हो। सेम है हमारा 14 days रूल, इसमें थोड़ा सा एक्सटेंड कर दिया है, 1 to 14 days तक सेफ हो, आप कोई भी प्रोसीजर कर सकते हो, बट उसके बाद कंफर्म करने के बाद ही प्रोसीजर करोगे अगर आप लोगों के बीच में मैटिंग हुआ है। नेक्स्ट आजकल का जो रूल्स है वो है 28 days रूल। तो ये रूल में क्या बताता है, दिस स्टेट्स दैट रेडियोलॉजिकल एग्जामिनेशन इज टू बी जस्टिफाइड एंड टू बी कैरिड ऑन थ्रू आउट द साइकिल until a period is missed, thus focusing that missed period is having the chances of pregnancy। ठीक है, तो 20 डूज में ये बता दिया है कि आपको सबसे पहले क्या करना है, जस्टिफाई करना है नीडेड और नॉट नीडेड, प्रेग्नेंट हो या नहीं हो। फिर आपको क्या करना है, आप ये प्रोसीजर में कोई भी
बाउंडिंग नहीं है कि आप 10 दिन तक ही लोगे, फिर नहीं ले सकते हो, 14 दिन तक लोगे, नहीं ले सकते हो। तो आपको क्या करना है, आप ले सकते हो किस में, एंटायर द 28 डेज साइकिल, आप पूरे साइकिल में कर सकते हो, जब तक आपको ये कंफर्म नहीं है कि आपने पीरियड मिस किया है। ठीक है, क्योंकि आपने जब पीरियड मिस कर लिया है तो ये आपके लिए एक चांस हो जाता है कि आप कहीं प्रेग्नेंट तो नहीं हो। तो दैट थिंग यू शुड कीप इन माइंड। ओके, सो प्लीज प्लीज प्लीज, जो भी पब्लिक्स ये वीडियो देख रहे हो, अगर आप कोई भी रेडिएशन डिपार्टमेंट में हो तो एक बार प्लीज अपने टेक्नीशियंस को इन्फॉर्म कर देना अगर आपने पीरियड मिस किया है, तो वो आपको फॉलोइंग रूल्स एंड रेगुलेशंस में ही आपका एग्जामिनेशन करेगा। और एक चीज़ है जो स्टाफ्स है उनके लिए है कि आपके जो 10 डे और 14 डे रूल्स है वो आप कोई भी सिटी प्रोसीजर या तो आप कोई भी बेरियम स्टडीज कंट्रास्ट स्टडीज लेने से पहले फर्स्ट डू कंफर्म दैट दे आर फॉलोइंग द 10 days and 14 days rule। बाकी प्रोसीजर्स के लिए यू कैन गो विद द हेल्प ऑफ 28 day rule। Clear? Next, last question for the day is, should pregnancy be terminated after radiation exposure? क्या प्रेगनेंसी आपको टर्मिनेट करना चाहिए कि आपको लग गया कि आपने रेडिएशन रिसीव कर लिया है? इसके लिए भी कुछ क्वेरीज है कि अकॉर्डिंग टू ICRP 84 ये बता दिया है कि टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एट फिटल डोज ऑफ लेस देन 10 मिलीग्राम इज नॉट जस्टिफाइड बेस्ड अपॉन रेडिएशन रिस्क। अगर आपका डोज, ये बेसिकली स्टाफ्स के लिए है कि अगर आपने डोज 50 मिलीग्राम के नीचे है तो आपको कोई चिंता नहीं है, आपको कोई टर्मिनेशन की जरूरत नहीं है। अगर आपने 50 मिलीग्राम क्रॉस कर लिया है तो प्लीज तुरंत ही एक बार कंफर्म कर लीजिए कि वो सीवियरिटी कितना है, और हो सके तो आप यू शुड अंडरगो फॉर अबॉर्शन। If 500 milligram is received and it has been exceeded, so definitely the fetal will have a great damage based on magnitude and type of radiation, and immediately you have to undergo abortion. But before that also you have to look on our 3 stages, whether it is in pre-implantation stage or organogenesis stage or fetal stage. If it is fetal stage, okay, we will wait for some more days, we will check whether there is any abnormalities or not. If there is, we can undergo abortion. So that was all about our today's first portion of radiation protection, that is we discuss about patient exposure. So our session will be on continuation. So these are the sciences which we place on our department to alert the pregnant ladies। तो कोई भी पेशेंट अगर आपको ये साइन दिखाई दे रहा है और अगर आप प्रेग्नेंट हो, प्लीज डू इन्फॉर्म द medical staffs or technologists prior to have any kind of radiological procedures. And finally, this is the uh, protocol given by IAE, International Atomic Energy Agency. See, these are the stages also mentioned here, which stage is very much sensitive. So 1 to 2 weeks is somewhat less sensitive, but 3 to 15 weeks is more sensitive because organogenesis stage, and lastly 16 to 38 weeks are also again less sensitive. Next thing is, what should you have to do, what should you have to not do, all these are mentioned in our IAE protocol. So that was all about the session. I hope you have enjoyed the session. If you have any queries, please do mention me in the comment box or in the link given, that is my email ID. So I'll definitely answer your queries. Thank you. Stay tuned with us and share it to every staffs and publics of radiology and those who are coming to radiology. And we will be discussing on next 2 topics. Thank you.